what's happening. I don't know if I can post live so soon after one live. I don't understand why it's not happening. Hi. Just a second. I'm trying to go live on Facebook, but I I don't know what's the problem. I'll have to restart. Hi guys. Okay. I'll just restart this and now you can ask me your questions regarding this. जाएगा 100% जाएगा मेरे हिसाब से. एक मिनट में इसमें चेक करूं. चार्ट भी तो किया था. इतनी जल्दी नहीं जाएगा. हाँ एक्चुअली जाना चाहिए बट देखते हैं. टैरो करके देखते हैं. हाउ मेनी कैन बी इन्वॉल्व इन दिस. देयर इज नो नंबर. अच्छा वो जेल जाएगा कि नहीं पहले वो देख लेते हैं. And kitne, how many can be involved? Seriously, there's no number. I mean, imagine, I'm telling you, it's going right up till the world over. I don't know what's happened to my phone. I'm not able to get onto Facebook. I wish they would just come on YouTube. Just give me 1 second. Let me see if I can go online live. नहीं तो फिर हाँ right. Okay. Yes. TikTok actress, I'm really not sure if fan is very loud. You can't hear me. Okay, hold on. I'll just put it on. Are you okay with that now? वैसे मेरी आवाज तो इतनी बड़ी है कि आ जाती है. पता नहीं आपको कैसे नहीं सुनाई दे रही. महेश भट्ट, पहले you asked me. It's it's not just a racket. अब मैं ये चीज ना लाइव में बोलना नहीं चाहती हूँ. It's much more complicated and disgusting than what you think. It is not just to save one person. यहाँ पे ये जो सब लोग लगे हुए हैं ना रिया को बचाने में, ये सिर्फ रिया को नहीं बचा रहे हैं. उसके पीछे इतने लोग इसलिए उसकी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं ऊपर तक. So first of all, you asked me if Sandeep Singh will go to jail, and you asked me if Mahesh Bhatt will be jailed. Mahesh Bhatt. See, you have to understand one thing. Sandeep Singh हो, Mahesh Bhatt हो, Salman Khan हो या कोई भी हो, जो इंसान उस वक्त उसके घर में नहीं था, जिसने अपने हाथों से उसे नहीं मारा, I just did his chart, Chetna, and so जिसने उसे अपने हाथों से नहीं मारा, उसे जेल में डाल नहीं सकते. थैंक यू नीना. उसे जेल में डाल नहीं सकते.
तो संदीप सिंह रात को वहां पे था या नहीं, पहले तो उसे जेल में डालने के लिए ये प्रूव करना पड़ेगा। हाँ, उसने और बहुत सारी चीजें की हैं। सुबह के वक्त उसने मीतू को डिस्ट्रैक्ट किया, उसने एम्बुलेंस वगैरह ये वो जो कुछ भी हमें नजर आ रहा है यूट्यूब पे, और मैं वही कह रही हूँ जो यूट्यूब पे नजर आ रहा है या लोग बोल रहे हैं, तो वो सब उसने बहुत सारी चीजें की। उसने सुबह की पूरी प्लानिंग शायद उसने की। अ, किसके कहने पे की? उसका खुद का दिमाग मतलब इतना पिद्दा सा तो है वो, पता नहीं। और नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि इन दोनों में से कोई भी जेल जाएगा। So you want me to ask if the TikTok actress was murdered? Was Sushant Singh was killed in a past life? Is this true? Okay, so first of all, was that TikTok uh, actress murdered? Yes, she was murdered. There may be certain. Okay, hold on. This gets murkier than I thought. So she was in love with someone. She was hurt. She was heartbroken. And she was maybe, yeah. So maybe she was not really murdered as in murdered, but she was pushed to a point where she may have died. Because I get the card of she being killed. I'm surprised how that is possible. It's a love angle. I don't think it's got to do anything with Sushant. Wait, let me see. Does it have anything to do with Sushant? आप लोग भी नई नई कहानियां लेके आते हैं जो मैंने कभी सोची भी नहीं होती है। Yes, Chetna. He is already actually. नहीं, the TikTok female is not involved with Sushant. Yes, Chetna, he is already exposed actually. I don't know if you're on Twitter, but if you go onto Twitter and you read what all is being written, and if you go and check all those YouTube videos that I've been seeing, and my God, it's driving me crazy. You will be surprised how much is already revealed, uh, is exposed. But the point is that can he be jailed? Can he be put into jail? Okay. Will CBI investigate fairly? I did this just 2 days back. Acha, but that was on Insta story. Will CBI investigate fairly? I think so. हालांकि मैंने जब पिछली बार 2 बार मैंने ये सवाल किया है और दोनों बार मुझे ये जवाब मिला है कि यस, इट्स अ यस। मुझे दोनों बार ये जवाब मिला है कि ऐसा नहीं है कि उनको पैसा खिलाने की कोशिश नहीं की जाएगी। इनफैक्ट जैसे मैंने कहा कि सीबीआई टीम हरकत में पहले ही आ चुकी थी ईडी के आने के साथ, जब बिहार में ये एफआईआर लॉन्च किया गया, लेकिन ये जताया नहीं गया हम लोगों को, पब्लिक को जताया नहीं गया, पर पहले ही आ चुके थे हरकत में, तो उनको ऑफर पैसे तो किए गए हैं और किए जाएंगे, आगे भी किए जाएंगे, पर इस बार मुझे नहीं लगता वो मानने वाले। A new dawn. So it is a new dawn for India, for Bollywood, but it should be proved that he is involved. होगा होगा, हर चीज को वक्त लगता है, वो भी प्रूव हो जाएगा। Will Sushant take rebirth? No, somebody asked me Sushant was killed in his past life. Sushant was killed in his past life. He was born in 1986 and his life path was a 44-8. So yes, it is a possibility.
think he's okay. One second. This is interesting. Uh, yes, there is a possibility that he was killed by multiple people in his past life also. There is a possibility. Something has happened in his house. Even in the past life, it's happened in his house. It's happened in his house. What has happened? It was because of money. It was his uh, partner, like lover or wife or whoever that was, or husband, if he was uh, uh, male or female in his past life. It again, it was about money. Even in the past life, it was regarding money. It was somebody that he was married to or in love with. My God, how stories repeat. Unless and until you break that pattern, stories keep on repeating. Do you think is being accused only? Yes, yes, I've been saying that right from the beginning. No, see, she is definitely involved to a large extent, but the focus is on her. She's just a pawn. She's just used by all these big people, and you know, maybe वो दुबई वाले की बंदी हो, हमें क्या पता, जो यहाँ पे उसकी उसकी फेवरेट हो। क्योंकि जब मैंने न्यूमरोलॉजी की थी और उसके बारे में रिसर्च किया था, तो मुझे ये पता चला था, और ये हम खैर हम सबको पता है कि एक्ट्रेसेस को अपनी रखेल बना के रखने का उसको शौक था। बहुत एक्ट्रेसेस की जिंदगी उसने खराब की है, और पर वो शरीफ होंगी ये नहीं है। तो actual murderer is a hitman who has disappeared. Now whether he will go to jail, उसको जेल में डाल के क्या होने वाला है? उसको फांसी देनी चाहिए, वो भी पब्लिक में सबके सामने खुले आम। I will ask that. So I was just about to ask, will Sushant take rebirth? So right now he's with his mom, and he's very happy there. So he doesn't plan to, but yes, once this whole case thing is done with, he will very soon take rebirth. Authority of CBI thinks. I'm sorry, I'm not doing personal questions today, Lady Luck. Tampered evidence be retrieved? Yes, that's an important one. Will tampered evidence be retrieved? Will tampered evidence be retrieved? Not initially, but it will take time. It will take time. What the lady planner is doing at the moment, is she thinking how Ria can get caught in all these? The lady planner. Who lady planner? Which lady planner are you talking about? So, okay. There was some question here that somebody had asked me, will Salman be caught and arrested? Will Salman be caught?
I don't think so. Very low chances. I don't think so. He should be hanged. Yes. Yeah. So you asked me basically whether the actual killer, the hitman who had come from abroad to kill him, or abroad, or wherever he had come from. Maybe he'd come from Pakistan. We don't know. So will he be arrested and jailed? बचा लेगा उसको कोई ना कोई. वो तो निकल चुका. My God. Oh my God. This looks so much like the person who may have killed Sushant. You know, there was a video I saw where a woman says, a psychic reader, she says that I see this person is not very glad of what he's done, but he's moved on. He's gone. And I don't think it's going to be very easy to catch hold of him and jail him or kill him. No. अनलेस एंड अनटिल कोई उसका नाम दे दे और उसका अता पता बता दे, क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कौन था. अगर आपने नोट किया तो एक वीडियो आया था जिसमें सुशांत की सिस्टर उस नौकर को डांट रही है कि तूने पैसे लाखों में ट्रांसफर किए सुशांत के अकाउंट से, जो ये बताता है कि सुशांत के घर इतने सारे स्पाई कैमरास लगाए गए थे और उसकी एक एक बात, एक एक हरकत रिकॉर्ड हो रही थी. तो दिशा ने उसको जो कुछ भी बताया, जरूरी नहीं है कि सुशांत ने रिया को और संदीप को बताया हो सकता है कि उसके घर में स्पाई कैमरास होने की वजह से, याद है मैंने एक रीडिंग में ये बोला था कि ये भी हो सकता है कि ये स्पाई कैमरास या सीसीटीवी उसके घर में रिया ने लगाए हों उसके ऊपर नजर रखने के लिए, और जब उसे पता था कि इसको मार दिया जाने वाला है तो उन लोगों ने वो बंद कर दिया हो. याद है मैंने एक रीडिंग में ये बात बोली थी कि ये शायद रिया ने लगाए होंगे. तो जरूरी नहीं है, यू नो, नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, कि संदीप सिंह या रिया को सुशांत ने ये बात बताई कि दिशा ने उसको बताया कि पार्टी में ऐसा हुआ, वहां पे ये लोग थे, क्योंकि वहां पर रिया का भाई भी था. तो रिया को जब उसने स्पाई कैमरास पे देखा, उसे पता चला, तो उसने उससे इस बात के बारे में पूछा होगा और तभी उनका झगड़ा हुआ होगा. दिस इज व्हाट आई थिंक. दिपेश हैड इंजर्ड. डिड ही अटैक ऑन हिम? दिपेश नहीं, मेरे ख्याल से सिद्धार्थ पठानी was injured. Why was he actually killed? See, understand one thing, all of you. हम लोग इंसान हैं, हम लोग इस धरती पे रहते हैं, हमें सिर्फ इस धरती की जिंदगी और ये भाषा समझ में आती है, लेकिन जिंदगी सिर्फ इस धरती तक, मटीरियलिस्टिक लाइफ तक सीमित नहीं है. Life is not limited to the material world on this earth as humans. There is something beyond this. There is something called God. There's something called universal power. There is something called divine justice. There's something called karma, karmic cycle. What goes around comes around. अगर ये लोग पकड़े नहीं जाते, जिन लोगों का आप नाम ले रहे हो, सलमान हो, किलर हो, दाऊद हो, या कोई पॉलिटिशियन हो, या कोई पुलिस वाला हो, या कोई भी हो, अगर ये लोग पकड़े नहीं भी जाते, अगर मरने से पहले इस जन्म में नहीं तो कहीं ना कहीं आगे जाके किसी जन्म में इन्हें अपना भुगतान चुकाना पड़ेगा. और यू कैन नॉट इवन इमेजिन इन द वाइल्डेस्ट ड्रीम्स. में यही सोच रही थी जब मैं उस दाऊद की न्यूमरोलॉजी चार्ट कर रही थी कि इस बंदे के नंबर्स इतने अच्छे हैं, इस बंदे की पिछली जिंदगी भी शायद अच्छी रही होगी,
इस जिंदगी में इसने जो कुछ भी किया है, उसके बाद इसकी अगली जिंदगी कैसी, मतलब अगर ये मर गया, समझो नहीं किसी ने इसको पकड़ा, वो सुखी तो नहीं है आज भी अपने घर में, विच इज गॉड्स अनदर वे ऑफ गिविंग कार्मिक जस्टिस, ऑफ डिवाइन जस्टिस। वो अपने घर में सुखी तो नहीं है। क्या जिंदगी होगी उसके अगले जन्म में, किस तरह का भिखारी बनेगा या कोड़ी बनेगा या क्या होगा। तो जो लोग आज अपने पैसे के बलबूते पर नहीं पकड़े जा रहे, जरूरी नहीं है कि उनकी मौत अच्छी होगी। क्या पता 10 साल बिस्तर पे रगड़ रगड़ के मरे। आज कितने सालों से वो मतलब बीमार पड़ा है, बिस्तर पे पड़ा है, बहुत कुछ मतलब ना खा पाता है ना पी पाता है कुछ भी। इनका अंत कितना बुरा होगा। कलयुग है, जो किया भुगतान यही करके जाना है। अंत कितना बुरा होगा, जेल में डाल के क्या हो जाएगा। आप इन्हें, ये लोग पैसे के बल पे और अपने पावर के बल पे, अपने कनेक्शन के बल पे ऐसे निकल आएंगे जेल से। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, कितने साल, सारी उम्र तो जेल में नहीं रहेंगे। उसके बाद बाहर आके ये क्या करेंगे, फिर वही गंद मचाएंगे। उससे अच्छा कि भगवान उनको सजा दे। दैट इज आई अकॉर्डिंग टू मी बेटर ऑप्शन। अगर हमारी सरकार इनको पकड़ पाती है और सजा देती तो बहुत अच्छी बात है। एज लॉन्ग एज दैट punishment is stoned to death, hanged until death, or something like that. I mean, अगर कोई इतना इतना अगर कोई घिनौने घटिया अपराध करता है, इस तरह की हरकतें करता है कि छोटे छोटे बच्चों को आप रेप करते हो, पार्टीज में एनजीओ से और ऑर्फनेजेस से बच्चों को अगवा करवा के या बुलवा के आप उन बच्चों का शोषण करते हो और फिर उनको मार डालते हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड में होता है, गूगल करो पता चले हॉलीवुड में क्या क्या होता है। हॉलीवुड में एक कम्युनिटी है, जैसे हमारे बॉलीवुड में ये कम्युनिटी है, ये अब बनी है, ये हॉलीवुड को कॉपी कर रहे हैं, ये अब बनी है। ऐसी कम्युनिटी हॉलीवुड में है। वहां पर इनफैक्ट होम अलोन का जो बच्चा था, जब वो बड़ा हुआ तो उसने ये बात मीडिया को बताई, एक फ्रेंच रिपोर्टर को बताई। इट इज ऑल देयर ऑन द नेट के हॉलीवुड में एक कम्युनिटी है, जो छोटे बच्चे होते हैं वहां के फिल्म्स में, उन लोगों को बड़े होने ही नहीं दिया जाता। वो जैसे ही पॉपुलर होते हैं उन लोगों को पार्टी में बुलाया जाता है। उन लोगों का यौन मतलब वो क्या कहते हैं, शोषण, यौन शोषण कहते हैं कि सोडोमाइजेशन कहते हैं कि रेप कहते हैं या पीडोफाइल कहते हैं। वो सब करने के बाद उनको मार दिया जाता है। मारने के बाद उनकी चमड़ी के जूते बना के यही लोग पहनते हैं। मैंने इस बच्चे के साथ सेक्स किया था, इसकी चमड़ी उखाड़ के मुझे 2 जूते बना के, ये होता है वहां पे। मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने ये बात सुनी, पढ़ी। हद होती है, आप इंसान हो या जानवर हो, आप लोगों को जानवर कहना भी गुनाह है। जानवरों को बदनाम करने वाली की बात है ये। कैसे कैसे क्या आप, क्या हैवान तक नहीं बोल सकते, हैवान भी इनसे अच्छे होंगे। ऐसे लोग हैं ये लोग। That murderer was a hitman. He was a killer. If you want, I will ask that again. He was not a politician. He was not a actor. He came and he left. He was a paid guy. उसको पैसे दिए, जैसे आप एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो कि मेरे घर का कोई पंखा खराब हो गया, उसको रिपेयर कर दे। वो आता है, पंखा ठीक करता है, पैसे लेता है, चला जाता है। इस तरह से उस बंदे को पहले से पैसे दिए गए थे, वो आया। और ये कार्ड्स भी मेरे यही कह रहे हैं, कार्ड्स भी मेरे यही कह रहे हैं दैट ही वाज अ पेड hitman. He was not there in any party. He was not a person to attend any parties. Yes, it was exposed yesterday. When did he actually die, in the night or morning? I've already answered that, but I will do that again. Let me take up some other question. Was Ria in an illicit relationship with Junior? Uh,
यू नो, आई एम सरप्राइज कि आप लोग ये आज भी मुझे उसके बारे में ऐसे सवाल पूछ रहे हो, क्योंकि अगर आपको अब तक ये एहसास नहीं हुआ कि वो किस तरह की लड़की थी, आप जाके वो जो इंडस्ट्री, जो कंपनी है इन लोगों की, स्पोर्ट्स पीआर शिप की, एक क्वान एंटरटेनमेंट और एक वो दूसरी कौन सा नाम बताया था किसी ने मुझे, ये जो सलमान खान की भाभी की भाई की कंपनी जो भी है, ये जो कंपनी में जिसमें दिशा काम करती थी, और उसके बारे में ये कहा जाता है कि वहां पे जितनी मॉडल्स आती थी फिल्म में रोल के लिए, मॉडलिंग के लिए, सीरियल में रोल्स के लिए, उन वो कंपनी इन लोगों को काम दिलवाती थी। जैसे आदित्य चोपड़ा की कंपनी सुशांत वगैरह सबको काम दिलवा रही थी, ऐसे इनकी कंपनी भी लोगों को काम दिलाती थी। और वहां पे जितनी लड़कियां आती थी उन लोगों के साथ मतलब अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज होता था, उन लोगों के साथ वर्बल अब्यूज होता था, उन लोगों के साथ मतलब उनको अगर काम चाहिए उनको ही काम मिलता था जो उन लोगों को सेक्सुअली सेटिस्फाई करे, उनके साथ सो जाए। और उस कंपनी से रिया निकल के आ रही है, महेश भट्ट के साथ ऐसे पिक्चर्स पोस्ट कर रही है, वो सुशांत के साथ इतने महीने रही है। आप लोग अब भी सोचते हैं कि उसका सिर्फ एक इंसान के साथ कोई संबंध रहा होगा? पता नहीं कितनों के साथ रहा होगा। सलमान, शायद उसका भाई अरबाज, महेश भट्ट, ये जिसके बारे में आपने पूछा मुझे, पॉलिटिशियन के बारे में, शायद कमिश्नर के साथ भी। कमिश्नर उसको इतना क्यों वरना मतलब बचा रहा है, क्या पता उसके साथ भी। और पता नहीं किन किन के साथ, वो दुबई वाला, वो उसका वीडियो देखा था रिया का, जिसमें वो बोली थी अपन तो क्या छोटा छोटू है, छोटा डॉन है, छोटा डॉन है, और बॉस तो वहां बैठा है। आई मीन शी इज एक्चुअली कॉलिंग हिम बॉस, गाइस। डोंट यू अंडरस्टैंड? डोंट यू गेट इट? लर्न टू रीड बिटवीन द लाइंस। सुशांत, मैंने परसों एक जो रीडिंग की थी ना, मैंने कल कल परसों की थी, जो मैंने इंस्टाग्राम पे कार्ड्स डाले थे, उसमें किसी ने मुझसे पूछा था सुशांत के बारे में कि वो क्या सोच रहा है, क्या कहना चाहता है। उसका मैंने एक कार्ड निकाला था, मैसेजेस फ्रॉम द स्पिरिट से। आई डोंट नो इफ यू दैट that card is here. No, it's not here. I'll have to look for that card, but it's there on my Instagram and my Facebook. अगर आप पढ़ें, उसमें क्लियरली लिखा है उसने, ये जितनी कहानियां आप सुन रहे हैं इन कहानियों पे मत जाओ। ये सिर्फ ऊपर ऊपर से है, ये जस्ट स्किमिंग द सर्फेस। ये सिर्फ ऊपरी कहानियां हैं, ये बहुत गहरा है। I don't feel there was any party on the 13th night or any big shot at his home. Only murderers were there. Yes, Amrita, I agree with you. Even I felt the same. I kept saying the same. Why did Mumbai police go to SSR's house today? They spoke to the watchman for less than 5 minutes and left. I'm not aware about this, but why did they go? Let's find out. Are you sure that there was no CBI person with them? वो पैसे खिलाने गए थे वॉचमैन को, और उसको चुप कराने गए थे कि कोई भी कुछ बोलेगा तो तुम बोल देना, हमें नहीं पता। ये करने गए थे वो लोग। पैसे प्यार से बहलाने फुसलाने, क्या पता उसे पैसे के साथ शराब की बोतल भी दी हो, और हो सकता है उस शराब की, व्हाट इफ उस शराब में कुछ मिला हुआ है। पैसे पैसे, इट्स जस्ट मनी, इट्स जस्ट मनी। व्हाट इज इम्पोर्टेंट अबाउट दिपेश? You mean to say the his head being hurt? Was it Dipesh? I thought it was Siddharth Pithani. It was Mumbai police. Okay. You're missing my questions. I'm sorry, Amrita. What was that? What was your question? What was your question, Amrita? Can you please type? Was there any real party?
No, nahi. I don't think I've been saying this from day one. I don't think there was a party at all. Okay, so was there any real party happening? Was there any real party happening? So party was happening, but party का बहाना था. As in party हो नहीं रही थी. पार्टी के बहाने से लोग वहां पर गए थे कहने के लिए, पर पार्टी सुशांत नहीं कर रहा था. पार्टी के बहाने से वहां पर गए थे. वो लोग पी रहे थे, खा रहे थे, मजे कर रहे थे. You know what actually I think? Okay, I'll show you the cards. What it is that I really think, पार्टी के बहाने से वहां पे गए और सुशांत के सामने जो हो रहा था वो सुशांत को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वहां पर किसी के साथ कुछ घटिया हरकत हो रही थी जो सुशांत को अच्छी नहीं लग रही थी. मे बी ही वाज ट्राइंग टू स्टॉप दैट, और he was probably against it. एंड वो सब इसलिए किया गया क्योंकि जब उनको पता चला कि इसको दिशा की, जिस पार्टी में दिशा, यू नो, आई डोंट नो व्हाई पीपल कीप सेइंग दिशा के घर पे पार्टी, बिकॉज इट्स बीन प्रूवन के पार्टी सूरज के पेंट हाउस पे हुई थी, दिशा के घर पे नहीं हुई थी. और आई थिंक दैट वाज द स्टोरी. एंड वो घुमा फिरा के बात यहाँ पे आ गई है कि दिशा के घर पे हो रही थी. दिशा के घर पे कैसे हो सकती है? तो पार्टी You know, there was one person killed along with Sushant in his house, and I still don't know who that girl is, and I still don't know who was that rich woman or one girl that kept coming up in my cards. Today, she's not come up as yet. But I want to ask if there was a girl, there was a hitman who had later on joined. पार्टी के नाम पे वहां पर 3 लोग थे. तो नहीं, पार्टी मुझे नहीं लगता कि एक्चुअल पार्टी हो रही थी, पार्टी का नाम हो रहा था. दीपेश के बारे में क्या पूछूं मैं शलीजा? व्हाट इज इट दैट यू वांटेड टू नो अबाउट दीपेश? Dipesh too. Is that murderer wasn't Disha's particular? What? Dipesh about what? I didn't get your question. Shaliza, I did not get your question. Will that artificial intelligence patent story be exposed in public and legally? So what about Dipesh is it that you want to know? Dipesh ने पैसे खाए हैं और वो चला गया है. आराम से पैसे वैसे खा लिए उसने और वो चला गया है. He is gone somewhere. This is what I see in my cards. Is there another body in that time when police was there?
What does CBI authority thinks at that moment? Was there another body when the cops got there? Was it there? Yes, it was there. Actually, there were a lot of proofs, lot of evidences, lot of things were there. But the cops muddled it up. They hid it. They hid it. बहुत जल्दी किया इन लोगों ने ये सब. Uh, Let me take some question from here. Why did Mumbai police go to SSR's house today? So I've already answered that. I don't feel there was any party. I've answered that. The rebirth I've already answered. Priya was not there. Who was entertaining them? Priya was not where? Sushant's house. Media report girl was attacked. Amrita, I have been reading. आजकल मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है यूट्यूब वीडियोस देखने का या पढ़ने का. पर कि जहां तक मुझे पता चला कि सुशांत किसी लड़की के साथ मिलके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता था. तो मैंने सोचा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उस लड़की को वहां पर बुलाया होगा और वो शायद स्केलेटन जो मिला वो उसका था. लेकिन बाद में ये पता चला कि वो किसी माइनर लड़की का था. दैट गर्ल वाज अंडर एज्ड. वो छोटी थी उम्र में और उसके साथ पता नहीं क्या हादसा हुआ था और वो कहाँ इन्हें मिली है और क्या हुआ है मुझे नहीं पता. पर मैं पूछ सकती हूँ कि पहली बात तो हमें ये नहीं पता कि सुशांत के घर में जो लाश थी दूसरी वो लड़का था या लड़की थी. वो लड़की थी. उसके साथ कुछ गलत हुआ था. यस. वो अंडर एज थी. यस. यस. किसने किया ये मुझे नहीं पता. ओके, आई एम लूजिंग आउट द क्वेश्चंस हियर. हिटमैन. अरे यार ये निकल गया यहाँ से. एक सेकेंड. Why was coffin in Sushant's house? कॉफिन सुशांत ने खुद ही बताया है. एक मैंने किसी का वीडियो देखा था कि सुशांत ने बताया वो कॉफिन के अंदर अपने अवार्ड्स और अपने जो भी विन करता है वो उसमें डालता है सो दैट ही डज नॉट गेट अटैच्ड टू इट. So I spoke about the second body, Monica. I just said if anyone related to the biggest tycoon involved anyway in this murder, which Keshav's, it was Keshav, another servant. No, I am not aware of Keshav being dead. I don't know. Let me ask, because I just asked that it was a girl. No, not Keshav. Who brought the minor girl to Sushant's house and how come she landed there? So मैं इतनी देर से यही बोल रही थी कि इन लोगों की बड़े बड़े लोगों की पार्टीज में लड़कियों को ऐसे लाया जाता है और सुशांत के घर में जो लोग आए थे उनमें से कोई उसको ऑब्वियसली लेकर आया. ये तो कहानी जब निकलेगी तब पता चलेगा. Yeah, I know. Even you're asking, even she's asking me this Sten gun story. What do you want me to ask about the Sten gun story? It is so obvious that the Sten gun was used. The forensic experts have proved it. Please check if
bring in a change and are involved. So you want me to check if Mr. Modi and Mr. Amit will bring a change in this scenario, in this case? Okay, let's ask that. Set your sights higher. This is coming for the second time. गाइज मैं वही कह रही हूँ कि आप लोग जिन लोगों के बारे में सोच रहे हो उन लोगों से अपना ध्यान हटाओ. उस सी बियॉन्ड दैट, उसके आगे देखो, उस गहराई में जाओ, ऊपरी ऊपरी बातों में उलझे मत रहो. Nikita, yeah, kind of, but well, yeah, they have their own, benefit in that. So yeah, kind of. Indian mastermind be caught. Do we even know who's the Indian mastermind? There is no Indian mastermind. So the mastermind is sitting in Karachi. Okay. So what I have, heart attack story, true or just acting? Obviously he's acting. Obviously he's acting. It's not true. वो justice से डर रहा है. He is scared that he will be taken away for questioning. That is the reason he has done that. Okay, now let me come to the point. I didn't want to say this on public media. Please do not take me wrong. हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हमारे लिए सब, this is a secular country. For us, at least for me, everybody is only a human. I am basically not a religious person and I do not give importance to religion. But there are a lot of people who do. Now, what has happened is it's there on Google. If you Google it, you will come to know. All this information I found on Google. When Dawood Ibrahim got involved in that case in 2011 and he became the top criminal to be wanted by the FBI and all the world over. I will ask that, Dolly. Just remind me. He ran to Karachi. Now, Karachi, he is a person जिसकी जड़ें हिंदुस्तान से जुड़ी हैं और जो हिंदुस्तान से एक तरह से अपने तरह से बहुत प्यार करता है. अपने रत्नागिरी जहां पर वो पैदा हुआ वहां से बहुत प्यार करता है. अपने घर से बहुत प्यार करता है, अपने लोगों से बहुत प्यार करता है. वहां जब वो गया है तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसे प्रेशराइज किया आईएसआई का साथ देने के लिए. आईएसआई का साथ देने का मतलब यहाँ पर जब रिलीजियस मसले उठे, राइट्स हुए, तो ये सब आईएसआई वगैरह इन लोगों ने करवाए इसके थ्रू. क्यों करवाए? क्योंकि यहाँ पर लोग, यहाँ कैसे बोलूं, यहाँ पर कुछ लोग धर्म को लेके बहुत सेंसिटिव हो रहे थे और परेशानियां खड़े कर रहे थे और डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिटी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे. तब आईएसआई ने इसे फोर्स किया बहुत सारी चीजें करने के लिए. जो बॉम्बे में जो ब्लास्ट्स हुए, सीरियल ब्लास्ट्स हुए,
या जो कुछ भी हुआ टेररिज्म के, वो जो कसाब वगैरह सब लोग जो समुंदर से आए, उसका भी अरेंजमेंट, बोट्स का अरेंजमेंट इंडिया में आने के लिए दाऊद ने करा के दिया. All these people, all these incidents that have been happening in India were all, helped. Uh, ISI was helped by Dawood because he was being pressurized. He did not want to, but he was being pressurized. And if he had to live in Karachi, there was nowhere else that he could live because of the world organizations and the FBI looking for him. Safest place for him was Karachi. अब वो लोग ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में, this includes a lot of people. Hi Siddesh. This includes a lot of people who are trying to run the industry. शुरू में जब सुशांत सिंह के डेथ के बाद, मर्डर के बाद ये बात शुरू हुई थी, लेकिन दब के रह गई. बहुत लोग चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री जो पहले कपूर्स और खन्नास और कुमार्स की थी, खान्स की हो जाए. They want to dominate each and every single industry in India so that their religion can be not only popularized, but people can be converted, the country can be converted, and they can take over. ये सारे लोग कहीं ना कहीं ISI से मिले हुए हैं. महेश भट्ट की जो वीडियो मैंने देखी, आधे से ज्यादा वीडियोस तो मुझे लोग भेजते हैं, कभी व्हाट्सएप पे, कभी ट्विटर पे, कभी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो मैंने वहां से देखी हैं. I have not gone searching for old videos of all of these people, लेकिन महेश भट्ट की एक पुरानी वीडियो थी जहां वो पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल गैदरिंग में, ह्यूज गैदरिंग, huge, must be 500,000 or 2,000 people, वहां पर वो स्पीच दे रहा है और he is saying some things to this effect about the Hindu-Muslim divide in India. So all these people are somewhere connected, and the real reason all of you are asking me why was Sushant killed, the reason Sushant was killed is that they did not want what Kangana has been saying from day one is not just nepotism, but she is right. They do not want boys from outside or other talent from outside to come into this industry because they want monopoly of the Khans. And all those other people who are not a Khan, they only survive. Trust me, they only survive only if they do bootlegging, licking of these people. इनकी बात मानते रहोगे, इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहोगे तो जिंदा रहोगे. अजय देवगन ने अपनी कंपनी, प्रोडक्शन कंपनी शुरू कर ली अपनी फिल्में बनाने के लिए. अक्षय कुमार ने अपनी फिल्में बनाने के लिए अपनी कंपनी शुरू कर ली. रोहित शेट्टी अपनी फिल्में बनाता है. आदित्य चोपड़ा उसकी अपनी कंपनी है. करण जौहर, सलमान खान बहुत सारे कंपनीज के साथ पार्टनर्स है जहां पे वो लोग साथ में इन्वेस्ट करते हैं. Why? Because they want a hold on Bollywood, and this is part of the truth. This is what it's all there online. I'm only saying what I have read or seen online. Who intentionally pushed the CBI officer? I saw that and मुझे भी वो कुछ ठीक नहीं लगा. लेकिन उससे क्या होता है, अगर वो सीबीआई ऑफिसर को पुश कर रहा है
तो हमसे ज्यादा सीबीआई ऑफिसर का दिमाग चलता है. तो I don't know who, but why? Because इतने मीडिया वाले जमा थे. This is what I think. इतने मीडिया वाले जमा थे, सब लोग हर तरह का सवाल पूछेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन में रुकावट नहीं आए, इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आए. इस वजह से शायद किसी ने सीबीआई ऑफिसर्स ने ही सीबीआई ऑफिसर्स को बोला होगा कि चल तू आगे चल, छोड़, ये तो लगे रहेंगे. दिस इज व्हाट आई थिंक. Yeah, yeah, I'm right. I don't know what you understand by these tarot cards. आगे बढ़ो. You see that chariot? Investigation करनी है. बहुत सारा स्ट्रेस है. So मीडिया के लिए टाइम नहीं है. Okay. What was the next question? About the heart attack. Vandana, Mahesh Bhatt has been hospitalized because it seems he says that he's got a heart attack. How many months? In how many months? So last time परसों जब मैंने कार्ड्स किए थे तो it said 4 weeks, मतलब 1 महीना. Okay, now coming to that. 1 महीना इस वक्त आज है 21st of August. 29th of September को Ketu is going to move from Sagittarius. Rahu is going to move from Gemini and Ketu is going to move from Sagittarius. जो इस जस्टिस को क्लाउड किया हुआ है, होने नहीं दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा. इनफैक्ट, थैंक यू विवेक. इनफैक्ट क्या हो रहा है कि जो नक्षत्र में सर्टन प्लैनेट्स हैं, those are also ruled by Rahu and Ketu. Certain nakshatras I read somewhere some 10 days back. मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा. Because it is ruled by Rahu and Ketu, so one by Rahu, one by Ketu, and because Rahu and Ketu are there, and Mercury has been in Gemini. I don't know if it is still in Gemini. I think it's shifted to Cancer. I'm not sure. Mercury is communication. Mercury is internet. Mercury is documents, investigation के files, वगैरह वगैरह. So Mercury rules all of that. Sagittarius is ruled by Jupiter, who does justice, who does justice. He's the guru. So वहां पर केतु बैठा है, और केतु जहां पे होता है वो उस चीज को बर्बाद करता है, उस चीज को प्रॉब्लम्स लाता है, उस चीज में झगड़े करवाता है. तो राहु और केतु 29 सितंबर को वहां से शिफ्ट होके चले जाएंगे. राहु विल गो इनटू टॉरस, which is the lagna of the chart of India, the country India, and Ketu will go into Scorpio. Now, very interesting that you should ask me this, and very interesting कि मुझे ये बात याद आ गई. Sun, which is in Leo right now, on the 14th or 15th something, it will be moving into Virgo. Virgo में Sun जाना. Now, Sun is politician. Sun and Saturn का जो combination है वो politician है. Saturn, which is in the 10th, will be aspecting Sun in Virgo. Now, Saturn aspecting Sun in Virgo, मतलब politicians शिकंजे में आना, छत्रभंग योग कहते हैं इसे. मैं पानी पी लूं, मुझे चक्कर आ रहा है. बोल Okay. Sun, मतलब politician. Saturn is the judge. Saturn is the judge. Judge politician को अपने कब्जे में लेने वाला है.
जब 14 सितंबर के बाद सन वर्गो में जाएगा। वैसे भी सिक्स हाउस ऑफ इज नॉट सपोज टू बी अ वेरी गुड हाउस। वहां पे 29 सितंबर के बाद केतु आ जाएगा। नहीं, वर्गो में नहीं आएगा। Taurus will go into Taurus is the Lagna of India, meaning Scorpio is the seventh house right across, right? So केतु वहां पे स्कॉर्पियो में जाने से, दैट मीन्स उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट आने से लग्न के इंडिया के, व्हाट विल इट डू? उसके नेबर्स, उसके सामने वाले जो लोग हैं, सामने sun will move from Virgo into Libra, where sun is weak. That means the politicians who are playing this game are going to become weak. Mars is in Aries. That will be aspecting sun. It will give sun stress. Politicians को stress, जो ऑलरेडी शुरू तो हो ही चुका है। उसके बाद नवंबर, आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ डेट्स दी थी और बोला था याद रखना। एक तो थी कुछ सितंबर की एक डेट दी थी, अक्टूबर 11 नवंबर की एक डेट दी थी, 11 से 19 नवंबर के बीच में, जब सन स्कॉर्पियो में जाता है। अब सन गया स्कॉर्पियो में, वहां केतु ऑलरेडी बैठा है और सैटर्न का एस्पेक्ट आ रहा है। सो पॉलिटिशियंस, एक तो, हाँ अब याद आया मैं क्या कह रही थी। जब ये वर्गो और लिब्रा के बीच में सन होगा तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट गिरने के चांसेस 1। स्कॉर्पियो में जब सन जाएगा और सैटर्न से एस्पेक्टेड है, किसी ना किसी पॉलिटिशियन को अरेस्ट होने के चांसेस है। कम से कम अरेस्ट वारंट तो आ ही जाएगा। अरेस्ट होता है कि नहीं ये आगे पता चलेगा। मेरे हिसाब से अगर ऐसा हुआ, अगर वो अरेस्ट हुआ, अगर उसे सजा हुई, उसकी फैमिली में बहुत जल्द एक डेथ होने के चांसेस है उसकी। एंड you remember, not right now Karan, please hold on, let me finish what I am saying. 19th, yes Sandeep, 19 to 11 to 19 November and 19 December to 21st December are going to be very important dates astrologically. Other than that, there is a date in October that is important, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। सितंबर अक्टूबर में भी एक शायद डेट थी, 9th September is going to be an important date. 13 September is going to be an important date. So let's see what happens on these dates. October 25. October 25. Why do you say that? Why October 25? October 25, there are certain things that are going to shift in live video paused. ये IGTV की यही प्रॉब्लम है, जैसे ही 1 घंटा होता है ना ये बंद हो जाती है। 1 सेकंड में इसको बंद करके दोबारा चालू कर लो। ओके, तो कुछ बिजनेस में, फाइनेंसेस में, there will be certain things that will
that will shift on October 25. This is what I see. And October May, Sun will be in Libra, and Libra is the sign for businessmen. So there are certain, it'll be, I feel, it'll be a period of transition for a lot of businesses and people in business when things will become better. Okay. So, justice in the end or just more stories? You know what? Justice in the end. जस्टिस को अभी टाइम है, जस्टिस को अभी बहुत टाइम है. इस साल बॉलीवुड का भरता हुआ है, अगले साल स्पोर्ट्स फील्ड, पॉलिटिशियंस नहीं, पॉलिटिशियंस नहीं, सॉरी, न्यूज एंड मीडिया एजेंसीज की चटनी बनेगी मेरे हिसाब से. और बहुत कुछ होगा. CBI, all those people who investigate, all those people, the police, all of these people. मुंबई पुलिस का अभी तक हमें सिर्फ पता चला है, उसके हमें ये सामने दिख रहा है कि वो करप्शन कर रहे हैं. एक्चुअल स्टोरी उसकी नेक्स्ट ईयर बाहर आएगी या शायद अक्टूबर के बाद. थैंक यू सुंदर. Getting repeated thoughts about this date. December, I have already spoken about. November 15. Why do you say November 15? There is a news that push a man and his mother. Are you serious? Pushed a man and his mother to suicide. Is that true? And who was that man and when did this happen? Is this regarding Sushant's case? No, it was not pushed to suicide. No. Are you saying emotionally and mentally pushed them to do suicide? Because if that, then yes, it is true. He emotionally and mentally may have pushed them to the point of suicide. Yes, that's true. Emotionally and mentally pushed them to the point of suicide. गिरना मत. Okay, don't fall. Be careful. मैं खोल दूं? Are you sure? Okay. Sorry. Man from Alibag. This was last year's news. Okay, I'm not aware, but let me tell you something. There is see about this person. Understand one thing. हम लोग कोई इस तरह से हमारे दिल को जो अच्छी लगे, जब कोई ऐसी बातें करता है तो हम उसकी हर बात को सच मानने लगते हैं. CBI let us know truth finally. Yes, CBI will let us know truth finally. Hold on. कौन है बेटा? मैं खोल दूं? One sec, I'll just open the door. चाबी नहीं है उसके पास. Why do you do this? Okay. Sorry. So कोई जब बात बोलता है तो हम लोग उसकी हर बात को सही मान लेते हैं, लेकिन कभी कभी आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए. मैंने आपको क्या बोला? अगले साल या अक्टूबर के बाद मीडिया, न्यूज चैनल्स वगैरह वगैरह, इन लोगों की पोल खुलनी शुरू हो जाएगी. हम लोग जब किसी की, और चैताली तुम जिसकी बात कर रही हो मैं उसी की बात कर रही हूँ, कि हम जब किसी की बात सुनते हैं
उसकी बात अच्छी लगती है तो उसकी हर बात को सच मानते हैं। हर बात को सच नहीं माना जाता, क्योंकि अगर ये आईएसआई या दाऊद या ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस या पैसे वाले लोग अगर सुशांत को मार सकते हैं या पुलिस को पैसा खिला सकते हैं या लोगों को पैसा खिला सकते हैं, तो उसको पैसा क्यों नहीं खिला सकते? कि तुम अपने चैनल पे जो बोलना है बोलो, बस इस चीज को मत बोलना, जिसका भी नाम लेना है लो, लेकिन फलानी फलानी बात मत बोलना। यू नो देर आर सो मेनी पॉइंट्स। मैं अपनी तरफ से मुझे जो भी समझ में आता रहा और मुझे सही लगा, मैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे वगैरह वगैरह, यहाँ तक कि मैंने फोन नंबर और ईमेल फाइंड आउट करने की कोशिश की, उसके ऊपर मैं भेजती रही। इस टॉपिक के बारे में आप क्यों बात नहीं कर रहे हो? इस टॉपिक के बारे में बात करो। लेकिन मेरी उन बातों पे ध्यान ही नहीं दिया गया। और इट्स नॉट अबाउट मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया, पर अगर आप इतने इंटेलिजेंट हो तो ये छोटी सी बात, छोटी छोटी जो बातें हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो पब्लिक को समझ में आ रही हैं, आप उस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? Why are you not taking up that question? That is my simple point. There are so many things that are being pushed under the carpet by talking about all those things that are not important. Bollywood वाले ट्वीट क्यों नहीं कर रहे? Is it that important? No. ये फलाना ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये यहाँ गया, वो वहां गया, ये सब चीजें इतनी जरूरी नहीं थी जिनके ऊपर इतना वक्त बर्बाद किया पब्लिक का। जो जरूरी है चीजें, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते हो आप? तो चैताली, व्हाट यू आर टेलिंग मी, understand what I'm trying to say. I will not take names, but it is a possibility that that person could also have been paid. सीबीआई को भी पैसा खिलाने की कोशिश कर सकते हैं, तो वो किस खेत की मूली है? Trimukhe and Dahiya, I don't know who they are. Man from Will Earth get any better? Or is it full of people? Okay, so Monica, is Ria pregnant? She is not a woman to be pregnant. Why will she be pregnant? She's already moved on to somebody. She's having an affair with another person. She's not pregnant. Okay, so ये दुखती रग छेड़ दी मोनिका. Ouch. The earth will get better, but this year is just the beginning. You will see some stories happening next year. You will see a lot of stories happening in 2022. Cool, and have fun. Yes, she is Tanke. Is hitman name is Deepak or Ritesh? Hitesh. I don't think his names are these. He is probably from the UAE or Dubai. So his name will not be this. Yes, I was right. His name will not be this. It is a possibility, I feel, that this hitman may be either a Catholic, Christian, or a Muslim. Second choice is Muslim, but definitely not Deepak or Hitesh. मैं कुछ बात कर रही थी. The way he sat beside the door, I got scared that some. No, that was my son. He's a special child, and he has a problem, with his hands and legs. And my other son was outside, and he forgot to take the keys. So he had called my son to open the door. So he was trying not to disturb me and go and open the door. But let me tell you what happened yesterday. Yesterday,
electricity went away all of a sudden when I was reading about. I was seeing this YouTube video yesterday. The channel's name, I will put it up on my Facebook page. I was seeing this YouTube video and I literally went into depression. I was not scared. I'm not scared. But it was sad. It was sad the way things are happening on Mother Earth. And suddenly, electricity goes. Not just in my house. So I thought it was my house. Then I realized it was a building. So the first thing I did was double lock my doors and made sure that my phones were on. Thank you, Desire Diaries. And the third thing I realized that the electricity it has gone in the whole area because my house I have CCTV all over my house. And the only way somebody can they can't actually because it's connected to my phone. Anyway, so yesterday, yeah, I was that did come to my mind yesterday, and today my mom also said the same thing. But ठीक है, इतने लोग मर गए एक और से कुछ नहीं होने वाला मुझे. My archangel Michael is there to protect me. So, any other questions, or is that it? Surbhi Sharma, what's the secret of what? Why am I getting that some official secrets of India has been leaked out and is related to this case? Is it? I will not be surprised. Official secrets of India have been. The last card I'm going to do is a message from Sushant that somebody, Sangeeta, I don't know if you're listening, Sangeeta, but she loves these cards and she had requested me to pull this card 2 days back. So I think, no, that's not true. That's not true. Official secrets of India? No, that's not true. It's the Tower card. It's not true. Okay, Shruti Modi, to what degree is involved? So, you know what? This is what I was thinking. This is what I had been messaging Arnab on Twitter that Shruti Modi is the one who told Sushant to leave that house in Malad where he was staying with Ankita. I don't know how. Yes, of course, the patent has been stolen. Yes, thank you. So, yes, Sangu, that's what I just said. I just mentioned you. So, Shruti Modi had told SSR to leave that flat, which is probably when Ria met him after that and she came into his life. And that is when he ventured big time into films. Like he had done a couple of films before that, but uh, he was not a threat to these Bollywood mafia. So, yes, trust me or do a reading. You are someone to whom I'm listening for so long. Otherwise, I'm so impatient. I believe and love you. Thank you so much. Thank you so much, Desire Diaries. Something patent, Preeti. It's all over the news. It's all over Google. You can find out. You can Google it. Like I said, I will put on the link of the videos on my Facebook page. Please check from there. Um, Sushant was a partner in a company which was about artificial intelligence. He was, and the partners were Salman Khan. The partners were Kwan, which is Salman Khan's this thing. The partner, there was another partner who was this Surat Singh and connected. Now this
Sushant was not aware. I don't know if AU was a partner also, but I have been told that probably he was also a partner. I'm not sure. Uh, Sushant found out that one of the partners, there were quite a few partners. One of the partners is indirectly linked to and a person of Dawood who was doing this on the behest of probably ISI or whoever, and they had become a part of, and by the way, Dawood has just not no sorry not Dawood sorry in that video it was also told that this company, this PR company, kya naam tha uska, Cornerstone or something, has just entered into an agreement or opened something with wherein India is trying to cut off from China and severe all ties with China. This company, Cornerstone, has entered into a new agreement with somebody in China. Whether this is about money laundering, whether this is about, uh, I don't know, human trafficking, that is what is said in the video that I am quoting here. I have no idea about this, but you can Google it. And so yeah, this is all that it is all about. And this company, AI company, which was indirectly linked to Dawood and doing all these nefarious activities, Sushant came to know about it probably, and he wanted to withdraw from the company. This is what I saw in one video, that he wanted to withdraw from the company, and he said, okay, whatever y'all have invested, I will give it to you. Today I have the money, I will give it to you. Take that money, but leave or release me. Or because that company had so many apps or programs to help the world, health benefits, and other people and stuff like that. So he really wanted to help people on this earth. He wanted to do something good for the world, and uh, they were keeping an eye. That is the reason Ria was put into his life 3 years back. So last time when I did reading, I told you that this planning has been going on for 3 years. Ria must have come into his life in 18, I think. I don't know. I don't know when she came into his life. But all this planning has started since then. When Sushant got into an agreement for that company, that is when they wanted a spy on him. That is why they sent Ria into his life. And that's why she had all those spy cams all over his house. Okay. It's been more than an hour. Thank you, Krupa. I think I should end it now. It's been really long, and I'm sure even you all are tired. If Sandeep Singh, will he tell the truth? You really think Sandeep Singh will tell the truth? एक नंबर का झूठा है वो. थर्ड डिग्री मिलेगी तो ओके, लेट अस सी. वो तो भागने के फिराक में है. भागने के फिराक में है वो. और अगर फ्लाइट से नहीं जा सका तो बोट से दुबई या पाकिस्तान चला जाएगा. अभी न्यू मून हुआ है ना. New moon has just happened 2-3 days back. So yes, he is being guided by someone after this new moon to run away. Now you will understand why I say all those things, because I see it so much in these cards and I feel it. And now, thank you, Preeti. You're most welcome. Every time I think, okay, this was my last video about this case. पहली बार मैंने वीडियो सिर्फ इसलिए किया था कि मैं ये बताना चाहती थी कि ये सुसाइड नहीं है. नम्रता, थैंक यू
so much कि ये सुइसाइड नहीं है, आवाज उठाओ, मर्डर है। और मैंने सोचा उसके बाद बस, उसके बाद दोबारा जब मैंने चार्ट्स किया मैंने रियलाइज किया, थैंक यू दीपा, रियलाइज किया कि देयर इज मोर टू इट। सो इसलिए मैंने इतने सारे लोगों के चार्ट्स किए। दिन ब दिन ये केस इतना उलझता जा रहा है कि लोगों के दिमाग में सवाल है, मेरे दिमाग में सवाल है, एंड ऑब्वियसली यू नो इतना इट प्लेज ऑन माई माइंड। ऐसे लगता है जैसे सुशांत मुझे आके बोल रहा है कि उठ कर। मतलब मैं इतने दिन से अवॉइड कर रही थी, लास्ट वीडियो के बाद भी मैं अवॉइड कर रही थी, ये न्यूमरोलॉजी में अवॉइड कर रही थी, पर कल, और मैंने सोचा नहीं था कि मैंने इन दोनों की न्यूमरोलॉजी करनी है। मैं तो वो पुराने न्यूमरोलॉजी चार्ट्स जो किए थे वो करने बैठी थी, लेकिन well, maybe he just wanted me to do it. I clearly feel that I am guided by him. Okay, so the last card by message, if there is any, from Sushant. Sushant, if you are there, if you would like me to give a message to your fans. Yes, so he's here. I thought he was there outside my window. I don't know why I felt I could see him, or I felt he was looking at me. I could feel that presence. That's exactly why मैं बार-बार वहाँ देख रही थी. But okay. I just wish you didn't have to go so soon. पर तुम आए थे यहाँ पर यही सब करने, दुनिया का सच हमारे सामने लाने. सुशांत का मैसेज आप सबके लिए जो देख रहे हो, love your dreams. Love your dreams. Okay? I don't know why this catches me more on this side than this side of the card. So it's live your dreams. Live your dreams. Chashma laga ke bhi nahi dikhta. Okay. Isn't dearest you? Yes. That is a very, I want to show you this. None of the cards have this, okay? You see this. None of the cards have anything like that on the back side. None of them. And what caught my attention was this on the back side. And okay, so he says, that's why I picked this, or I was asked to pick this. Dearest you, isn't it amazing how things seem to come around again? Full circle in ways you could not possibly have planned. You remember what I said in the earlier thing? Karmic justice happens. What goes around comes around. Karma. You wonder how a dream could die, only to be resurrected years later when you're really ready. You thought it was time back then, but your wisdom knows better than your small self. I feel he's trying to say that maybe this life was not the time for his dreams to come true, and he will come back to fulfill his dream. Somebody asked me that here, right? He will come back to fulfill his dream as a Bollywood star whose desires are but your wisdom knows better than your small self, whose desires are unmet. I think more than being a Bollywood star, his desire was to help people of this Mother Earth in more ways than one. That's what I feel. Now here you are with a new opportunity to do things from a different, more mature perspective. I feel what he's trying to tell you is, मेरी जिंदगी से सबक ले लो.
मैं इतना कुछ करना चाहता था, नहीं कर पाया, मुझे तो मार दिया गया, पर आपके पास वक्त है मेरे सपने को, अपने सपने को पूरा करो। और ये सब जो खिचड़ी पकी है ना, जो रायता फैला है ना, इससे सीख लो कि जिंदगी किस तरह से जीनी चाहिए। दैट यू नीड टू डू गुड थिंग्स टू पीपल, यू नीड नॉट टू mean things to people, that you need not trust blindly, that you operate out of love. This is what I feel he's trying to tell you when he says uh, do things from a different, more mature perspective. क्योंकि वो तो बच्चा सा था, बहुत मासूम था वो, बिल्कुल बच्चों की तरह. We want you to trust that in this new opportunity for rebirth, you will be called in two directions, and the one that is unfamiliar will be the right one. What I feel he's trying to say is, सच की जो लड़ाई होती है, जस्टिस की जो लड़ाई होती है, वो कभी भी आसान नहीं होती. उसमें कई बार ठोकरें भी खानी पड़ती है, कई लोगों की जान भी जाती है, कई लोग बर्बाद भी हो जाते हैं, लेकिन वो लड़ते रहते हैं, वो डरते नहीं है. जस्टिस के लिए हो, सच के लिए हो. एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर योरसेल्फ. आज आप सब उसके लिए लड़ रहे हो ना, अपने तरीके से सही, किसी भी तरीके से सही, उसके लिए लड़ रहे हो. तो राह चलते जब आप किसी के साथ ना इंसाफी होते हुए देखते हो, तो क्यों नहीं लड़ते, क्यों नहीं बोलते, क्यों आंखें बंद करके आगे बढ़ जाते हो, क्यों बोलते हो दिस इज नॉट माय स्टोरी, दिस इज नॉट माय सर्विस, नॉट माय मंकी. व्हाई नॉट? व्हाई डजंट एनीबडी? हर इंसान डरता है. एक्सीडेंट हुआ है, मर्डर हुआ है, कुछ भी हुआ है, मैं बीच में पड़ा, पुलिस आके मुझसे सवाल करेगी, कौन कोर्ट के चक्कर काटेगा? आज सुशांत के लिए आप सब, अगर आप सबको बुलाया गया कोर्ट में, जाओगे या नहीं जाओगे? उसकी जगह आप होते तो आप क्या एक्सपेक्ट करते? दिस इज व्हाट आई फील. And the one that is unfamiliar will be the right one. In the unknown spaces, the uncharted places of infinite potential, we are waiting to guide you into your fullest life. You know what I feel with this line? I think he's trying to say, number one, what you think, what you feel, what you speak, what you write, and that reminds me, manifests. Always speak positive, think positive. Justice hogi, justice hoke rahegi. Each and every person who is involved, दूर तक भी, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, उसके साथ डिवाइन जस्टिस होगी. Think that. And the other thing what I was just about to say is, मैंने अमावस्या के दिन, वो अभी भी वहां पड़ा है, अमावस्या के दिन पेपर पे लिखा था. वो अमावस्या के दिन, आई कीप putting these posts on Instagram and Facebook. I don't know how many of you follow that. अगर कोई ऐसा वक्त, मौका, घंटा होता है जब आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, तो मुझे जैसे ही अंदाजा होता है, पता चलता है, मैं डाल देती हूँ. तो मैंने तब बोला था कि लिख के उसके ऊपर एक दिया जलाओ, वो पेपर लिख के रखो, उसके ऊपर दिया जलाओ कि सुशांत को जस्टिस मिले. मैंने किया था, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने किया. मैंने 24 घंटे वो दिया जलाया था. थैंक यू मोनिका. और वो पेपर अभी तक पड़ा है, और वो पेपर मैं फुल मून के दिन उसको दोबारा दिया जलाऊंगी, और उस दिए से उस पेपर को जलाऊंगी. क्योंकि ऐसा करने से कहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी होती है. सिर्फ सुशांत के लिए क्यों, आप अपने लिए भी मांग सकते हैं. डू दैट. Big bounty will come if you remain in the present. You have come full circle, and now you can see that everything changes, is made new, and is given new hope.
here he is talking about the Mother Earth changing, Mother Earth being made new, and new hope to everybody. I still can't get over this. Love you always, love your dreams, live your dreams. Wow. Some ways he has. Okay, thank you everyone so much. I keep putting up tips on how best to manifest our wish to get justice on Instagram, on my Facebook page. So please follow my Instagram page. मैंने इससे पहले आज तक कभी नहीं कहा, मैंने कभी अपने YouTube को भी फॉलो करने के लिए कभी नहीं कहा आज तक, लेकिन लगता है कि ये लड़ाई लंबी है और शायद मुझे दोबारा आना पड़ेगा। लॉर्ड शिवा का भक्त था, इसीलिए तो शिवा तांडव कर रहे हैं। ये तांडव नहीं है तो और क्या है? तांडव इसी को कहते हैं। तो hi. So I will. All I was saying is that please follow Instagram, my Facebook page, and my YouTube, so that every time I do come in, you will know and you can be ready with your questions. बाकी मैं कुछ दिनों में अगर हुआ तो सन साइंस या मून साइंस के हिसाब से पोस्ट डालूंगी दोबारा YouTube पे। See you guys. Bye. Good night. Hi, Jyoti.